नमस्कार। ज्ञानोत्सव के इस सिलसिले में आपका स्वागत है। और मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में एक और संस्था शरीक हो रही है। हाल ही में हम लोगों ने एक नई संस्था शुरू की है, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उद्यमी संघ। हमारी योजना ये है कि बिहार के हस्तशिल्प में काम करने वाले लोगों को, बिहार के हथकरघा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सरकार के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच मुहैया कराया जाए। हम लोग कुछ दोस्त, जिसमें कि जफर इकबाल हैं, इकबाल साहब इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो एक कोलिका नाम की कंपनी चलाते हैं। उसको उसके साथ साथ राकेश जी हैं, जो अभी उपस्थित हुए थे। शिखा है, शिखा अंगम नाम की कंपनी चलाती हैं। राहुल है, जो हस्तम नाम की कंपनी चलाते हैं। इन लोगों ने मिलकर, अभी ज्यादा ही बड़ी काफी छोटी है संस्था, पर हम लोग एक हस्तशिल्प और हथकरघा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम मूलतः उसी के दृष्टि से तैयार किया गया था, लेकिन इसको हम लोगों ने ज्ञानोत्सव के साथ भी जोड़ा है। आज के जो प्रमुख वक्ता हैं हमारे, उनका मैं हल्का सा परिचय दे दूं। हालांकि हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस में हमने भेजा है। अ, केशव रंजन, निफ्ट दिल्ली से इन्होंने बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीए और इसमें बैचलर और मास्टर्स किया है। इसके बाद इन्होंने टोरंटो जीबीसी से डिजाइन मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ये कई फैशन संबंधी जो विश्वविद्यालयों में जो फैशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जैसे एमआईटी में, द डिजाइन विलेज में, इसमें ये पढ़ा चुके हैं, वहां पर शिक्षण कर चुके हैं। अभी करेंटली ये टी रेक्स ग्लोबल नाम की अमेरिकन कंपनी है, उसमें ये डिजाइन पर काम करते हैं। डिजाइन के क्षेत्र में भी इनका खास तौर से जो यूएक्स यूआई बोला जाता है, यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस, उस फील्ड में इनका स्पेशलाइजेशन है। हमने इनसे आग्रह किया था कि बिहार के हस्तशिल्प में डिजाइन की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर ये बोले। जैसा कि आप जानते हैं केशव, कि ज्ञानोत्सव और हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें एक मोटा मोटी फॉर्मेट है कि आप 30 से 40 मिनट बोल सकते हैं, और 10 से 20 मिनट हम लोग डिस्कशन के लिए रखते हैं। तो आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। कैमरा थोड़ा और एडजस्ट कर लीजिए, बीचों बीच आ जाइए, अच्छा रहेगा। स्क्रीन अभी आपका एक साइड हो रहा है। हाँ जी, एक स्क्रीन एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और बीच में आ जाइए, थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है। और अब आप शुरू कर सकते हैं। आप आराम से बोलिए, हम लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी, जी, एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अम, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर मी। मैं आप लोगों को इंतज़ार करवा के बहुत बुरा फ़ील कर रहा हूँ, बट टेक्निकल एरर्स की वजह से आई कुड नॉट जॉइन। थैंक यू सो मच। सो आई जस्ट स्टार्ट विथ माय प्रेजेंटेशन ऑन design perspective, how I see as a designer, and the kind of research I just did over कि कैसे हमारे लाइक बिहार के हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम सेक्टर को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। पहले हम मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या? हेलो? अभी स्क्रीन विजिबल नहीं, अब होगा। अभी आ आया? रहा है। हेलो? हाँ जी। आ अभी नहीं हाँ, था। हाँ, आ गया, आ नहीं? गया, आ गया। जी। हाँ, दिख रहा है। हाँ, एक सेकेंड।
ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है और हम डिज़ाइन कैसे करते हैं। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, रिसर्च कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कंपटीशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये कि डिज़ाइन एक जनरल नॉलेज के लिए कि डिज़ाइन इज़ बेसिकली टू क्रिएट अ प्रोडक्ट which matches the aesthetics of the era, and it could be future referenced as well. Also, it solves a kind of functionality. uh, uh, so पहले क्या होता था कि फंक्शनल जैसे व्हील होती थी, तो एक हमारा ये था कि इट सॉल्व्स अ पर्पस, बट उसके बाद उसमें चेंजेस आते गए एंड इट स्टार्टेड लुकिंग बेटर एंड बेटर। सेम वे एक बैग या थैला कह लें, so it keeps on getting better and better as we go ahead. Now coming to uh, I just told about the problem solving, functionality, usability and aesthetics, and then empathy मतलब जो purpose है किसी यूजर या किसी कस्टमर का कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन करें जो उनको समझ में आए, उनकी लाइफ बेटर हो उससे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको हम एक ब्रिज बनाना चाहते हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए, कि एक कस्टमर किस वजह से एक किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा। इट कुड बी इमोशनल, इट कुड बी फंक्शनल वैल्यू, इट कुड बी जस्ट फॉर एस्थेटिक्स, राइट, टू फॉर जैसे होम डेकोर हो गया या फैशन हो गया। uh, I'll try to be a bit fast with the slides. Uh, uh, इसमें whenever we design, there's a lot of process which goes in, where we try to get into the history of the product, evolution क्या हुआ over the period of time, लोगों के needs, लोगों के uses कैसे change हुए, then आप जिस जगह पे रह रहे हो वो, और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव उस जगह से के बाहर के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, व्हाट कैन वी टेक फ्रॉम देयर, and how can we improvise on the product which is being worked on. And then there is a philosophy which is basically called pestel. uh, Pestel is basically political, economical, social, technology, legal and environmental. ये पांच छह एस्पेक्ट्स हैं जो इट ग्रेटली इम्पैक्ट्स द प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। उस समय की टेक्नोलॉजीज क्या अवेलेबल हैं, एनवायरमेंटल नीड्स क्या हैं, सस्टेनेबल है कि नहीं। आजकल सस्टेनेबिलिटी इज अ वेरी बिग थिंग, and everybody is moving towards it, and everybody has that awareness that we have to save the planet, zero wastage hona chahiye, and this is being seen amongst the youths as well. uh, then as I said, that it starts with research, and it start with all these aspects of pastel, and then there are multiple reviews. Now I'll just jump quickly to uh, core design principles, the way we see any motive or any composition, जिसमें बैलेंस, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, रिदम, यूनिटी, प्रोपोर्शन, ये चीजें हम ओवरऑल देखते हैं किसी भी मोटिव को, किसी भी डिजाइन को असेस करने के लिए। बैलेंस बेसिकली कि एक कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड है कि नहीं। अब एक कोई जैसे मधुबनी पेंटिंग है, और मान लीजिए एक फ्रेम है, लेफ्ट साइड में कुछ पेंटिंग बने और राइट साइड में कुछ भी नहीं है, तो देयर इज अ नेगेटिव स्पेस, तो कॉम्पोजिशन बैलेंस नहीं लगता उस केस में। तो एज अ डिजाइनर, एज अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू एस्थेटिक, दे वांट टू सी द कॉम्पोजिशन एज अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन। सेम वे कॉन्ट्रास्ट कलर्स से हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट ज्यादा, कौन सा मोटिव ज्यादा ब्राइट है, इट इज बेसिकली कॉन्ट्रास्ट। then emphasis is basically in general discussion और conversation हम emphasize करते हैं किसी टॉपिक को, तो maybe the eyes of the motive could be shown through emphasis. Maybe कोई extra colors add करके, या कोई extra जो crystals होते हैं वो add करके, मतलब just to make sure that it comes out of the composition and it catches the attention of the user or the customer or the persona we are targeting. Then rhythm is there, that what kind of rhythm we follow.
मोटिव का रेपिटेशन है तो रेपिटेशन अनइवन है या इट फॉलोज सर्टेन सिमेट्री, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जब भी हमें किसी भी प्रोडक्ट को, not just handicraft, not just handloom sector, it could be any sector, it could be normal product design, it could be mobile apps, it could be sari, it could be anything, home decor as well. Then the proportion is something which is very debatable, because some people like symmetry, some people do not like symmetry. तो जैसे symmetry could contribute in balance also for a product, as in visual appeal of a product. And out of symmetry could mean that it is out of proportion as well. So all these 6 points are the key principle which we assess. These are the parameters where how we see design of a product, that oh, this is a good design, this is a bad design, like overall perspective. And line, colors, textures, elements of design, basically these help in creating a motive, creating a certain aspect of composition. Then now I spoke about elements of design and principle of design: color, shape, form, line, texture. You basically it helps create something or some motive, and all these like repetition of all this or certain arrangement of all these motives create different aspects of principle of design, which could be balance, which could be emphasis, which could be a movement, rhythm, or proportion, which I just spoke about. Now I'll talk about how we basically can use these principles and modify, enhance the visual appeal of the handloom and handicraft sectors, the products. So इसमें ये होता है कि इसमें काफी चीजों के साथ खेल सकते हैं, जैसे कलर्स हो गए, विजुअल बैलेंस हो गया, कॉम्पोजिशन को अलग अलग तरीके से यूज करके, जैसे मोनो कलर्स यूज किया, एक ही तरह का कलर यूज कर दिया, बहुत कलरफुल नहीं बना के, so that the impact is less and still looks very minimal and still looks very simple and acceptable across bigger user audience. Then functional adaptation is basically we define कि what kind of functionality we could add in a traditional product. अब when we see new products, we see that there's always a need of a power bank or चार्जिंग ऑफ ए फोन. सो ये अब जैसे फर्नीचर्स वगैरह में भी आने लगे हैं, छोटे छोटे स्टूल्स वगैरह में या टेबल वगैरह में, देयर इज इनबिल्ट सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम लाइक प्लग पॉइंट या कुछ ऐसा. सो दीज आर द मॉडर्न अडेप्टेशन व्हिच कुड बी थॉट ऑफ. देन मार्केट अलाइनमेंट, दैट व्हाट how the trend is moving, how the preferences of the user is aligning towards new needs, basically new purposes. Basically उस हिसाब से we can create those product, we can design those product as designers. Then one more thing would come here, like global audience का क्या चल रहा है. There are several news articles, then internet resources, libraries, and then जो fashion walks होती हैं, exhibitions होती हैं, उसमें काफ़ी materials ऐसा आता है जिससे we assess that what kind of product would come and what kind of trends which we can follow as designers. Then, as I said, sustainability is a major factor which is playing role in design, product design, and inception of any product. Sustainability means use of zero waste materials and which less impacts the planet. Fifth is storytelling through design. अभी आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट बस बना दिया या कोई एग्जिस्ट करता है, it is just not enough. There is some kind of vibe, some kind of story which has to be there, as in कुछ ना कुछ ड्रामा चाहिए किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए. And that really helps in picking up that product, picking up the market of that product. So that is something we as designers, हम जब भी कुछ ब्रांड बनाने का सोचते हैं, we always think that some kind of storytelling, some kind of drama has to be created around that product.
So I'm just trying to bring these different points so that आगे के स्लाइड्स में हम इन सबको जोड़ सकें. फिर आते हैं फिर केस स्टडीज जो अभी के मधुबनी पेंटिंग या अभी के कॉन्टेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स हैं, हैंड पेंटेड फोन केसेस, जर्नल्स, शूज यूजिंग ट्रेडिशनल मोटिव्स, ये सब कर सकते हैं, हो भी रहे हैं काफ़ी जगह. देन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहे हैं काफ़ी, जैसे the painting, the motifs are like being digitized and are being used on different product in a way, in a very minimal, subtle way, so that the identity, original identity, though is compromised as it's not being created by craftsmen, but of course technology is being used and it is like a quick production, quick, like lesser, it could be like cost effective as well, but it is reaching the audience. It might be solving the purpose by reaching the correct audience, that okay, मेरे को maybe I don't want to buy 2300 or 3000 rupees tray. I might want to get Madhubani painting only, but a digitally printed tray in like 999 or 1000 rupees. So then the art flow, it continues, it does evolve with technology, and but it continues in the essence of the minds of the youngsters, or maybe the people who are, willing to buy those things in a much affordable way, so that the art form sustains the inflation and all that. Then there as I spoke about journals and materials, there are like multiple magazines, multiple agencies which work towards the trends for fashion, home decor, and these really help in shaping that जो आप सोच रहे हो. Maybe I am sitting in Patna, or maybe I am sitting in maybe Rai Bareli, and I might not be knowing about global trends, but these agencies actually help us understand that what is going to come in 2025, 26, or maybe 2026, 27. So ये जो trends होते हैं, these are these are very big agencies. एक है WGSN है, एक डोनेगर करके हैं. ये एजेंसीज हैं जो जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स, एजेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड बैठे होते हैं. दे ट्राई टू understand the local trends, and they think and they analyze that if this could become global trends, and once this becomes a big resource, they submit, and the best trends are picked up, and these magazines are built every year. Like it's always in 2 years advance that we get. जैसे अभी हमारे पास फैशन और होम डेकोर का 26-27 का ट्रेंड आ चुका है. So these all would define the manufacturing, design, development of all these products, articles which would come eventually. Now coming to the practical application, while it is said that retaining the original form is advisable so that the essence doesn't go away, uh, but personally I feel that sometimes you need the art to flow, to sustain, so that balance has to be there, that ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मोटिव रहे, बट लोगों तक पहुंचे एटलीस्ट. इट शुड नॉट बी दैट एक्सपेंसिव कि लोग सोचने लगे अरे छोड़ो बाद में लेंगे. But yes, coming back to the slides, consider the culture. Just a sec. So retaining the original form means the motives and all the cultural aspects should be like stitched together so that the essence doesn't go away. Now I'll just speak quickly about the uh, aspects which where we see as a scope. We have rich heritage. The motifs and the paintings and the crafts are very unique. The cultural identity where it belongs, it creates some kind of nostalgia, because people like to buy it. People like to have that recall value whenever they visit that place, visit any place for that matter. एक artifact या एक souvenir खरीदने का एक there's a charm, right? uh, this sector might not have that much of exposure of how things are working, how the products are designed around in the metro cities. But once that aspect comes into play, it would be much better.
It would help that the whole product range to get uplifted and get promoted across other cities and maybe globally as well. Now, talking about the significance of modern design, how it could help. So, modern design, what I mean it to be is creating the kind of products I told about it earlier as well, that creating kind of product which are more adaptable to the present scenario, price points, and to the needs of the current new kind of users, right? And amalgamating all those points into creating one product, one beautiful functional product which is affordable, which is scalable, and which can reach, and which can be marketed well to the audience so that it does sell. Value addition, it's basically the design and how we make it more functional aesthetically. Then the cultural storytelling, I told about the creating that drama, the creating that story behind it. Then sustainability factor, zero waste and all that. So I have spoken about all this more or less. I'll just move to the next slide with the images which would help you understand. So now I'm trying to show few different products, like which has beautifully amalgamated different cultural backgrounds, traditional motifs into a modern art form, or and it's basically digital printing. It's just a lamp, and people who like to who do home decor, they could use these kind of product, and these are selling on some websites. The Although this is not Madhubani, or this is not like a typical art form from Bihar, but it is like it's picking up inspiration from different motifs and all. But what I'm trying to say is just marrying the functionality with the traditional aesthetics so that it comes out to be a beautiful product. uh, so these are some example of uh, block prints and some kind of cushions which are there, which is a big thing. Home decor is a big thing. Then coming off to the furniture segment, there could be like a chair which could have some kind of painting, embroidery, which could blend from the Madhubani and different motifs which are available in Bihar. It could be a small table, it could be different bags, right? And then plates, bags, clocks, wall clocks, it could be there. Then I was also looking at these plates. These were beautiful plates where um, creating that vibe thing which I spoke about. There are many cafes and restaurants which are coming up in Delhi and Patna as well, and they have some kind of significance from Bihar, and that nostalgia, that originality. So if they could just thematize their whole thing with these products, so what would be the result? People will be more, people would get more attracted to these kind of product. But ये product available to ho, I mean somebody would have to work on these things. So ये कुछ फर्नीचर मेरे को अच्छे लगे, जो I thought that these would look really good in those motifs, be it digitally printed, or be it actually hand painted, or embroidered in those ways. Then there is a significant question that I tried to answer in the previous slide, was not if nostalgia plays an important role when we talk about handicraft uh, for across different states. Right now we are talking about Bihar, so I'll just stick to that. So nostalgia does affect, does create that aura to buy that product. But what we feel is uh, uh, right time, right people, right place. The product has to be placed in a way that people who want to buy or who wishes to buy, they should find that product in that place where they regularly visit. Now I'll just try to share an example. I recently visited Patna, and I saw many people who travel to Patna Sahib, and it's a there's a hotel, a newly built hotel, Taj, and I saw there's no souvenir shop there.
So I just thought that why not, all the big hotels have shops from India, for India, Indian artifacts and all. So I thought that they could have added that kind of shop which would promote that kind of crafts, and the people will also feel good that okay, my product is getting placed in that hotel or that souvenir shop, and they will feel good about it. Although there are many examples which I'll come later what is happening, and things are being done, but it's just that more things are required to be done, so the art form picks up more pace. So I'll just go through the slides which is basically talking about the main pointers, that how uh, a design institution, how innovation and products could help in uplifting. There are like 10 pointers, I'll just quickly rush through. A workshop with the artisans, although there are many training program which is happening, and the just to ignite the keep the spark ignited, there has to be more training programs where the artisans feel that themselves as significant part of this community. And with the design institution like NIFT, they are actually working with the artisans, and they are sending the students to the craft cluster program which is happening in Mithila, Madhubani, and also in Nalanda and Gaya. And they are working with different forms of craft, and the students are working with the artisans. They're trying to create good products out of it, and all this are being documented. And so there's a whole journal library in NIFT Patna, and which eventually gets recorded in NIFT Delhi as well. And so that these art forms, these craft forms remain intact, and it never dies. Then collaborating with designers, which is happening with like some few examples, like Saman Chauhan is a designer. He has been like representing the silks of Bihar. He has been using Bhagalpuri silks in his all his collection. And recently he represented show in Surajkund, my Surajkund Mela, that was my handloom, my pride. So there were many designers who were representing different states. So Saman Chauhan represented Bihar, and it got really good. It picked up a lot of awareness. Then it was shared with Instagram and all that. I'll just quickly go back. Yeah, so I was talking about collaborating with designers and celebrities. So right now there are few designers who are working on this. There's one more designer. She has been creating using the Bihar craft forms and creating a different kind of products which are related to. Just a sec, I'll just show. So these are all sustainable bags. This is Sumati Jalan, and she has a brand Bihar, and this is all about the zero waste journey. And they are making towels, they are making bags, they are making kurtas, they are making men's, women kurtas as well. So it's these things are picking up and they are making headlines. So we need more of this kind. We need more of the support from the people there. Uh, and coming back to and then there's just we got to know that there's an extension center which has been set up in Begusarai for the NIFT Patna. This is basically to train the uh, uh, craftsmen there. So NIF faculty regularly create that kind of event so that they can speak to those craftsmen, and they can train them with the new color, new trends, so that there could be more evolution which with the forms they create, with the work they do. uh, so this is about. And then there have been designers who have been evolving more motives for the Bavan booty. So these are basically geometrical motives which are like uh,
which are related to Buddhism, and there have been designers involved in enhancing those motive and creating more motives out of it. And there have been brands which have been creating different products out of it, like Pana is there. Then there's one more, just like, yeah, Bunkar. So they have their own website, they sell. So designers like, there's a designer, Amit, Vijaya and Richard Pandav, the duo designers have been working around those artisans, and they have created one of the product range out of them. So these things are happening. So there could be more designers who could get involved and create uh, amalgamate, or say metamorph different kind of products out of these crafts, so that it could pick up more attention. Now, brand identity, all these contributes into brand identity. So with the design, it is always like a holistic way to see any product. The whole story builds out of it, and the kind of vibe it creates, that creates that awareness, that draws that attention. Now, coming back to the focus on branding and storytelling, it's almost what I said about it. It just adds to it. Then collaborate with celebrities and artists from Bihar. So there have been known celebrities which we don't need to take names, but they have been associated with Khadi Mall, and they have been brand ambassadors. And just, yeah. And the Khadi Mall, which has opened up recently in Patna, it has been there, but some kind of renovation which has happened, and it has picked up the market really well. There's a craft shop which is there, and people are really excited about it. So these things are happening, and these things should keep on happening. uh, then just a sec. Yeah. So I was talking about celebrities and the people who are working into social media. The kind of followers they have, uh, followers are from across the continents. It's just not Bihar, it's just not Delhi, it's not just not Bombay. So so as one product gets popular, it gains the popularity across the followers, and it does helps in sales, and it does helps in picking up that product really well. Now, just then digital platforms, I just spoke about the social media also. The presence has to be there on the Amazon, Mintra, Ajio, Flipkart. There are all those shopping websites. And then I spoke about the vlogging and celebrities, which basically are like available reels on Facebook, Instagram. Like, people just flip through and just get to know that what is happening around in fashion, films, and what kind of clothes or accessories the celebrities carry, right? So those marketing links or media links are there, that you can just buy those product online, that you can learn more about it. Then also came across the Bihar Couture runway. There are several fashion weeks which has got introduced in Patna, and it does pick up the attention while people are in metro cities. That okay, there is some things are happening, and they're creating buzz. Then talking about the participation of national and international exhibition. So there has been art fairs in Delhi and art fairs across the nation, and uh, uh, although we have those stalls of crafts and products, but they're very expensive. That's kind of a challenge for a person who appreciates art. They might have to pay a hefty amount of that for that particular article or an item. So these things have to be taken care of. But yes, all these art fairs and exhibitions does help in creating that awareness. And then certainly the government sponsored and supports and subsidiary would help. uh, Recently, there was there's an artist, Subodh Gupta. Everybody, I'm sure, knows him. And in the Bihar Museum, there was an exhibition for about his the kind of artifacts he makes. So if these kind of people these kind of people basically are trendsetters, right? People follow him, people get influenced by him. So
So one designer basically influences the fellow designers, the junior designers, and upcoming designers. So it's always like a trickle down flow. uh, then having souvenir shop I told about. So there's a shop in the Bihar Museum. So why am I talking about this is because there could be more of these shops, so that people know about it more. So for the Bihar Museum audience, it could be more like art appreciators or people who can afford art, who like to go to the museums, who have that connection of connection or nostalgia, I would say. Or I would rather say that they kind of appreciate the old charm or the old art history. They appreciate history, they like to buy those things. So that is the right place for these. uh, and then coming back to the slides. So there could be more stringent quality standards. Then focus on tourism should be there. Although like there's a lot of focus on the tourism right now, but there's certainly a lot of improvement which could be made. Then sustainability, which have been repeating across the slides, use of eco-friendly materials and zero waste and all. Uh, so I put on the pictures of the airport just to aside the souvenir shop example, so that people who keep on traveling a lot, like some people just go to Patna or Darbhanga or Gaya for maybe business, or maybe Gaya is more like a tourist like destination. Vietnam flight, Cambodia, I mean sorry, Vietnam, Bhutan, Thai, all these flights come in, and like there are numerous tourists which come there. I'm sure they would love to see craft from Bihar, and they would just want to pick up some motive, some kind of. I just said about Bhavan Bhuti is connected to Buddhism, and I'm sure it would get picked up. So if there is a shop, it is good. If there is not no shop or nothing of that sort, it would really help in promoting those art forms. Then coming back to the cafes. So while I speak about design and then a holistic approach towards everything, uh, tourism is a sector. Then tourism also have those food as a one of the aspect. Um, so why not cafes and all could thematize in such a way that you actually feel that you are in Bihar, and you like that thing, and you might want to take that flavor with you when you go back to your home state or home country, right? So those so these things want the might help the user want to buy that craft or the available souvenirs of that place. I spoke about the Taj thing, about the souvenir shop. And the upcoming hotels are coming up. Radisson is coming up in Patna, and Hyatt could come. So they could have more. There could be more exhibition centers or art festivals which could go in those places and venues. Then collaborating with different retail brands, which would also help, like Reliance, Westside, Fab India would be really good. And then home center for home decor and all. And then coming to the some examples of how Menji movement from Japan picked up. It is basically a folk art form which basically got picked up by brands like Muji and Nitori. And then there are other examples include the artisans from Morocco. They Those motifs got reference in Christian Dior bags, also in Saint Laurent bags as well. Then India Jaipur rugs. So Jaipur rugs is a brand which has really picked up in last few years, and I'll just show. This is about the Menji movement, and just a few news articles related to that how the art forms got picked up due to the marketing and the whole story behind it. Then this is the Christian Dior bag, which takes the inspiration from that Moroccan art, Moroccan motifs and all. Uh, then this is about the Saint Laurent, the whole range on the Moroccan motifs. And this is about the Jaipur rugs. So yeah, they are also making headlines. Now I'll speak a bit about the trend forecast. This is towards the end of my presentation. So although
uh, the trend forecast does suggest that minimalism is something which is coming up across. It's something which is welcomed by everyone nowadays because of the digital chaos we live in. Everybody has a phone. The like multiple color option is there. You can change your screens and all. You can change. You have numerous apps in your phone, and then when you just come out of your screen, you don't want to see lot of stark contrast objects around you. So what the research says is people are going towards minimalism. They are embracing more of it. Youngsters are looking towards like less is more, and these things are coming up a lot now. I mean, people are thinking about these things. So lot of subtle colors, lot of village connection could be there, like so why am I telling you is, uh, since we spoke about creating products which how design can help, right? A designer looks at these different forecast trends and they apply to the products. So uh, so again, using multiple motives or different motives in a way that it doesn't look very much, it doesn't look overdone, but yet has that old charm. uh, Talking about the fashion trends of 26, 27, it is again a very quiet, subtle, and chaotic world is always there in all the trends, and bridging the past with the future, but again very subtle way. Quite power, new heritage, and human centric evolution, more focused towards what one wants, as in what an individual likes to, you know uh, how he wants to present themselves or how she wants to present themselves. So these kind of trends are coming, and it's more like an individualistic approach, that how the trends would transform the upcoming products in next upcoming years. Then there are future trends in the home deco as well. Art deco is basically geometry motifs, and how it would transform in the interior design products, lifestyle products, quite luxury and total look, minimalism and maximalism, basically amalgamating the minimalism concept and the maximalism concept, and creating something beautiful out of it. Natural and organic design, which is good for Bihar crafts, because a lot of motifs are organic and a lot of natural motifs are used. And then warm minimalism. So overall it takes it talks about the minimalism which is coming in the near future. It has been there, but it would be more eventually. So yeah, I would be open to question. My presentation is almost done. Back to you. Hello. Yes, बहुत yes, बहुत eagerly. धन्यवाद. Yeah, am I audible? I hope I have been Yes, audible. यस, So बहुत बहुत धन्यवाद केशव. आपने बहुत कम समय में बहुत लंबा बड़ा कैनवास लिया है और बहुत सारे सवालों को उठाया है. मैं सबके सामने फ्लोर ओपन कर रहा हूँ. यदि कोई सवाल पूछना चाहे, किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं. जफर यदि है तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि जफर कुछ इंटरवीन करें, यदि जफर सुन रहे हैं तो. जफर. जी, मैं 2 मिनट में मैं इंटरवीन करता हूँ, तब तक अच्छा, दूसरे ठीक है, साथी ठीक करें। है. 2 मिनट। और कोई ठीक। साथी यदि कोई पूछना चाहे. रूपक, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी सर। पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को एक फ्रेमवर्क किया। तो मेरा सर सवाल ये है कि इन्होंने दो तीन तरीके से चीजें बताई कि कैसे जो पीपल का आउटरीच है, खास करके डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स या अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, उस आउटरीच के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि सर मैं एक एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट में देना चाहता हूँ कि भागलपुर एज ए सिल्क इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है, और लेकिन जब हम बुनकरों की या उनके द्वारा निर्मित जो भी उत्पाद है, चाहे साड़ी हो या चादर हो, उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करते हैं तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको तक ये नहीं पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कि इसको प्रोडक्ट बनाने वाले कौन है, और हो सकता है कि
कि ये जो प्रोडक्ट है हम और सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं उस मार्केट में जाने के अलावा। तो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा यही कहना है कि एज ए जो इस आउटरीच को बढ़ाने के लिए एज ए ये चीज हम कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे या स्कूल के लेवल पे या छोटे स्तर से वहां पे इस चीजों को शुरू करके, और जो भी उस पार्टिकुलर एरिया से जुड़े हुए जितनी चीजें हैं उसको एक बढ़ाने का इस तरीके का प्रोग्राम सर करना चाहिए, मेरा यही कहना है। सजेशन। हाँ ठीक ये है। है, जी। मतलब किसी भी शहर में जो क्राफ्ट होता है हम लोग काफी अनअवेयर रहते हैं, जैसे जैसे जिस भी शहर में हम लोग रहते हैं। नहीं भी सर जी। जी। तो मेरा कहना ये है कि if I understand your question or suggestion right, it is about the awareness यस। issue that log they don't want to acknowledge that how great or how good the kind of creatives they have in their own city or in their own vicinity हम recognize नहीं और करते। ये लेकिन जब कोई जी। फॉरेनर आके उसको बोलता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है तो हम उसको देखने लगते हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है। सो व्हाट हैज हैपेंड अक्रॉस डिफरेंट different states is people have started recognizing their own, like जयपुर की ब्लॉक प्रिंटिंग, people know it that उन्होंने अपना पूरा मार्केट सेटअप किया हुआ है and there are multiple website for it, and Jaipur motifs are known, block prints is known and they all respect it. So I think अगर हमारे यहाँ भी अगर लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे अपने यहाँ की चीज़ों को, दे विल स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ इट, वो अपने आप that would flow out of the community as well, that people also would start respecting. Uh, uh, have I been able to pick up your point? Hello? Yes, कम्युनिटी कम्युनिटी और आर्टिजन कनेक्ट के बारे में है। मैं अभी वही अभी जो साथ, इसलिए हाँ अब मैं बोलने की हालत में हूँ, 2 मिनट में बोल हाँ हाँ, सकता हूँ। बोलिए जफर। जी। तो हाँ, कैमरा तो अभी ऑन अभी कर जो लीजिए साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हम्म, बोलिए। ऑन मैंने कर दिया है अभी। तो ठीक है। मैं मैं दिख पा रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। हम्म, बोलिए। खैर मैं खुद नहीं दिख पा रहा हूँ। हाँ, तो अभी एक साथी ने जो सवाल किया था कि भागलपुर से वो हैं या शायद भागलपुर से उनका आना जाना है, लेकिन वहाँ वो जो लोग बनाते हैं उनसे वो कुछ नहीं खरीद पाते हैं, या हो सकता है कि उनको लगता है कि जहाँ से वो खरीद रहे हैं उनसे भी ज्यादा और नीचे जा सकते थे वो, शायद जहाँ से वो खरीद सकते थे। तो वो इकोसिस्टम तो कभी डेवलप हुआ नहीं। और भागलपुर, चूंकि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ कई सालों से, तो कम से कम भागलपुर के बारे में तो मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ ज्यादातर सप्लाई सिस्टम रहा है कि दूसरे राज्यों को सप्लाई देते रहे हैं, जैसे अलग अलग बड़े शहरों में जो व्यवसायी बैठे हैं उनको सप्लाई दिया जाता है। तो उसमें फिर एक मार्केट का एक अपना जो डिमांड सप्लाई का एक मैकेनिज्म है कि एक सस्ता क्वालिटी, एक इसलिए कि हर को सस्ता चाहिए ना, तब तो वो बेचेगा। तो कोई बहुत परफेक्शन की क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी आपको मिल पाए ये कोई जरूरी नहीं है। और बुनकर इंडिपेंडेंट तौर पे काम नहीं करते हैं, वो किसी न किसी महाजन को देते हैं कि जो सप्लायर है वो लेता है और बेचता है। तो आप वहां तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे आमतौर पे। इसलिए कि जो कारीगर बना रहा है, खासतौर से हैंडलूम की जो बात कर रहा हूँ, तो पावरलूम तो शहरों में मशीन पे बनता है, तो वो तो किसी बड़े महाजन या 10-20, 10-15 हैंडलूम पावरलूम रखने वालों का एक इकोसिस्टम अपना है। तो वहां से आप फिर भी जाके खरीद सकते हैं। लेकिन हैंडलूम चूंकि बहुत गाँव में बनता है, बहुत इंटीरियर में बनता है, तो वहाँ एक्सेस नहीं है, कोई कौन जाएगा, वो रिसर्च करने जैसा जाने जैसा है। इसलिए है कि यहाँ अभी भी हैंडलूम पे काम हो रहा है क्या, जबकि हो रहा है, भले ही सीमित हुआ है। तो एक तो वो एक सेटअप करने की जरूरत है कि जहाँ कुछ कारीगरों का अपना यूनियन हो या समूह हो, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओज हो, जो लोकली करके और वो अपने हिसाब से ब्रांडिंग या रिटेल में भी जा सके। तो कई बार होता है क्या कि यहाँ का प्रोडक्ट बेंगलोर जाकर के या जयपुर जाकर के वापस बाजार में आता है, जिसको हम फिर उनके पहचान से हम खरीद रहे होते हैं, लेकिन वो होता है यहाँ यहीं का प्रोडक्ट। तो उसमें एक समस्या है। तो उसमें एक सेटअप बनाने की जरूरत है। तो हम लोग जैसे
और भी 2-4 लोग हैं जो कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज है कि किसी पे भरोसा ही करना होगा, इसलिए कि कई बार वो कपड़ा क्या है नहीं है वो भी पता करना बहुत मुश्किल है। तो एक सोर्स पे जाने से तो हमेशा ही होता है कि आपको क्वालिटी बेहतर, इंश्योर आप हो सकते हैं कि आपको क्वालिटी बेहतर हो। तो वो तो एक दोनों तरफ का प्रोसेस है कि आपको भी जाना होगा, जाकर के इस प्रोसेस को समझना होगा, और फिर ट्रस्ट की एक बात है। लेकिन केशव जी से मेरा एक दो सवाल जैसी चीज है कि एक तो बिहार अभी शायद जहाँ है, अगर हम मार्केट को भी अगर समझें तो बिहार शायद बहुत पीछे है। अगर राजस्थान गुजरात को अगर देखें तो उस हिसाब से अभी एक हैंड होल्डिंग की चीज या वो रास्ता ही, अभी हम लोग कैसे काम कर रहे हैं लेकिन वो रास्ता ही समझ में आ रहा है कि वो लोग बहुत उल्टा या जो ओरिजिनल फॉर्म में है वो बना करके बाजार तक पहुंच पाए, वही एक चैलेंज यहाँ हो पाता है। तो डिजाइन तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है कि मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या चीजें हो रही हैं, या कौन सा ट्रेंड, जैसा कि अभी आप बात नहीं कर रहे, कौन सा ट्रेंड वो फ्यूचर में आगे जाएगा, वो सब चीजें अभी तो हम लोग के लिए वो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। इसका प्रैक्टिकल चीजें यही हो सकती हैं कि कोई डिजाइन फर्म या डिजाइनर्स या इस तरह की चीज जो हम जैसे लोगों के साथ या डायरेक्ट कारीगर और बुनकरों के साथ किसी तरह की कंसल्टेंसी, जो एक प्रोफेशनल टर्म में ही हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो वो एक एक ब्रिज, कम से कम वो बातचीत, वो कन्वर्सेशन, डिजाइन जरूरी भी है क्या, या क्या हम लोग डिजाइन की वजह से पिछड़ रहे हैं, या गुजरात और राजस्थान हैंडीक्राफ्ट इस तरह की चीजों में अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या वो डिजाइन की वजह से बढ़ रहा है, या ओरिजिनलिटी मैटर करती है, या कितना ओरिजिनल होना चाहिए। अगर मैं कपड़े बना रहा हूँ तो कपड़ा कितना ठोस होना चाहिए, या कपड़ा कितना प्योर होना चाहिए, कपड़ा कितना मजबूत होना चाहिए, वर्सेस क्या कपड़ा इतना ट्रेंडी होना चाहिए, या वो डिजाइन है ना। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो हम लोग उस लेवल तक भी जा ही नहीं पा रहे हैं अगर बिहार के कारीगर। और जो मैं बात कर रहा हूँ ये शायद मैं जो सब लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी ही बात को मैं एक तरह से रिफ्लेक्ट भी कर रहा हूँ कि वो अभी हम लोग को लगता है कि वो इस पे छू ही नहीं पाए हैं कि वहां तक डिजाइन पूरी आवाज तरह। नहीं आ रही है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। इनकी आवाज हम लोग तक पहुंच गई थी। ये सब आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मतलब जो ये बात कह रहे थे जफर कि ये डिज़ाइन ट्रेंड्स और वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स ये बहुत मतलब ये एक अलग दुनिया की बात है। बट मेरा कहना ये होगा कि कहीं से तो शुरुआत कर सकते हैं। मतलब अगर अगर बिल्कुल। जफर किसी ग्रुप में है या कोई छोटा कम्युनिटी है वहाँ पे इन इन फैक्टर्स को लेके, क्योंकि अब इंटरनेट तो एटलीस्ट हर जगह है, और कॉमर्स ई रिटेल तो ये तो पॉसिबिलिटी अब बढ़ गई है पहले से काफ़ी। जितने भी कॉमर्स ऐप हैं जहाँ पे नॉर्मल मतलब फ़ोन से भी फ़ोटो खींच के आप डाल सकते हैं। प्लस जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, डिज़ाइन सेंटर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो रीजनल वहाँ के हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट करा सकते हैं, फैकल्टी से मिल सकते हैं। इसमें बस मैं ये बोलूँगा कि एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आप एवरीबडी इज इंफॉर्मेशन के लिए फ़ोन कॉल अवे है मोस्टली। वहाँ पे जितना भी रिसोर्स है मतलब क्रिएटिव लोगों का, मे बी इट कुड बी अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी, बट इट कैन हैपन। इट्स नॉट लाइक ये डिनायबल फैक्ट है कि ये हो नहीं सकता, इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। और ट्रेंड्स का जहाँ थैंक तक यू। सवाल है, वर्ल्ड ट्रेंड बेसिकली डिफाइन करती है कि ग्लोबल ट्रेंड बेसिकली लोकल लेवल पे ट्रांसफॉर्म होता है, फिर लोकल लेवल से जाके छोटे सिटीज तक जाता है। तो ट्रेंड्स फॉलो करना इसलिए बेहतर है क्योंकि वो बहुत रिसर्च के बाद होता है क्या कलर चले। अगर हम एक बस एक ओरिजिनल मोटिव या एक ओरिजिनल कॉम्पोजिशन को सोच के हम विदाउट थिंकिंग ऑफ कि कितना रिपीटेशन है, क्या बैलेंस है उसका, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग की साड़ी है, कुछ दिन पहले तक पूरी साड़ी में मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली लोग हाथ से करते थे। और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब काफी ट्रेंड्स ऐसे आए हैं कि इट इज जस्ट ऑन द एज ऑफ द साड़ी, मतलब नीचे या पल्ले पे। तो उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और अच्छा भी दिखता है, बैलेंस दिखता है, एस्थेटिकली अपीलिंग दिखता है, मिनिमलिस्टिक जो अप्रोच है।
So it is not very expensive thing to follow. It's just free of cost. मतलब ग्लोबल ट्रेंड तो आपको मिल ही जाएगा, आपको बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखना है कि मार्केट में वो परख के कैसा लगेगा कि पिकअप हो रहा है कि नहीं, बस यही है। थैंक यू। विद्या सर है हमारे साथ। विद्या सर कुछ पूछना चाहेंगे? विद्या जी हैं? और कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? केशव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, और बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स को भी आपने हम लोग की भाषा में, आम भाषा में समझा दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज आप देखे होंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर, व्हेन शी वाज प्रेजेंटिंग बजट, शी वाज वेयरिंग अ साड़ी गिफ्टेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम मधुबनी, एंड इट हैज बिकम नो वायरल। मतलब पूरे हमारे कम से कम 4-5 मित्र हैं जो बिहार और मधुबनी दरभंगा से हैं। उन्होंने कहा कि मतलब कि आज देखो, फाइनेंस मिनिस्टर जो साड़ी पहनी हुई है वो मधुबनी पेंटिंग है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि हमारे जो इंडिजिनस थिंग्स हैं, बिहार के प्रोडक्ट हैं, we come to know about that through different people. And I still remember कि when I was doing my PhD, इंडियन फेस्टिवल इन जर्मनी और या फिर यूएसए वगैरह में हुआ था, और वहां पर मधुबनी के आर्टिस्ट को वहां पर ले गया गया था, एंड दे पॉपुलराइज मधुबनी पेंटिंग। और थ्रू देम वी केम टू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मधुबनी पेंटिंग। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की इस तरह का पॉलिसी जो होता है, जस्ट सेंटिमेंट से खेलते हैं। हमारे या बिहार के गवर्नमेंट हो या फिर हमारा राष्ट्रीय गवर्नमेंट हो, वो सेंटिमेंट से खेल लेते हैं। लेकिन जहां तक प्रमोशन की बात है, उनको मतलब इंकरेज करने की बात है, वो कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। जहां पर आपने देखा कि बहुत सारे डिजाइन के माध्यम से लोगों में पॉपुलर किया जा सकता है, लेकिन कंजम्पशन का है, बेसिकली द कंज्यूमर्स हमारे नहीं है। कंज्यूमर, हमको याद है कि एक तो रोनाल्डो घड़ी का शोरूम पटना में खुला था, तो उसका 1-1.5 लाख का घड़ी ही होता था। तो पता नहीं हाउ मेनी कंज्यूमर्स आर देयर इन पटना। तो इस तरह का हमारे जो लैक ऑफ कंज्यूमर्स हैं, वह भी एक हर्डल है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो जो आम लोगों की जरूरत के सामान है, उसको अगर गिल्ड के रूप में, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो हस्तकरघा है या फिर ये है, तो इन सारे चीज को प्रोटेक्शन के लिए गिल्ड की अवधारणा को फिर से पुनर्धारित किया जा सकता है, और गवर्नमेंट को मजबूर किया जा सकता है कि वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, वी हैव आवर ओन इनोवेशंस, वी नीड सपोर्ट, यानी फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट। तो इसमें जो लोकल गिल्ड है, वो सब अपना डिजाइन और वैसे लोगों का जो मैकेनिज्म है वो सब डेवलप किया जा सकता है। चूंकि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या यह पॉसिबिलिटी है बिहार के कॉन्सेप्ट में? इसमें एक मतलब मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगा। आज मेरी बात हो रही थी किसी से जो प्रोफेसर हैं, फैशन कॉलेज हैं कि पटना में ही। उन्होंने मेरे को यही बोला कि डिज़ाइनर्स वगैरह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर पिकअप हो रहा है क्राफ्ट प्रोडक्ट काफ़ी खादी मॉल में, और बहुत मतलब पीपल आर गेटिंग टू नो द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव इन बिहार। बट जहाँ तक एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात है, जो एक निफ्ट से या कोई भी निफ्ट कॉलेज से पास आउट होकर निकलता है, वो पहले अपना वो देखता है कि व्हाट आर हिज नीड्स, एंड देन ही वांट्स टू गेट इनटू कि जब ही इज ओके विथ ऑल रोटी कपड़ा मकान, ऑल दैट वी टॉक अबाउट, ऑल द बेसिक नीड्स, पहले घर की जरूरतें वो सब, व्हेन ही गेट्स अ जॉब or she gets a job, they try to fulfill their own personal needs और जो भी ज़रूरतें हैं, and then they can think of these sectors that अच्छा handicraft भी है, craft sector को लेके जाना है। तो जो बड़े डिजाइनर है उन्होंने तो they had funding और they had sponsors, they did it। बट जो हमारे लेवल पे, जैसे आपने वो एग्जांपल दिया रोनाल्डो घड़ी की, शायद एक ही बिका होगा या 2 ही बिका होगा, कितने लोग,
तो उसके लिए तो मेरे को लगता है कि टारगेट करना, एक मतलब एक डिजाइनर पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का वो होना चाहिए, मतलब किसी तरह का हेल्प या सपोर्ट होना चाहिए, बट कोई भी प्रोडक्ट जब प्लेसमेंट करते हैं किसी भी शहर में, तो वी हैव टू थिंक दैट वहाँ पे ऑडियंस है उस प्रोडक्ट की या नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या प्राइस पॉइंट पे लोग खरीदते हैं, पूरा रिसर्च होना चाहिए कि वो उतना स्ट्रेंथ है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ पाएगा। अब बाकी रिलेटेड टू क्राफ्ट, आई थिंक वही वाली बात है कि जहाँ पे अप्रिशिएटर्स हैं वहाँ तक प्रोडक्ट पहुँचाना, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, एक्सटर्नल सपोर्ट, जो जो हेल्प करे प्राइस ड्रॉप डाउन में और एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस इन्हांसमेंट में अक्रॉस द नेशन। और एक आपका एक पॉइंट था दैट हमारा जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो हमें बाहर से पता चलता है न्यूज़ के द्वारा, या तो अगर ये ऐसा है तो क्यों ना हम और इसको प्रमोट करें, और ताकि हम और प्राउड फील करें सोशल मीडिया के द्वारा अच्छी चीज़, जैसे आज आपने एक एग्जांपल दिया जो मधुबनी पेंटिंग की साड़ी का आज विवरण आया, मतलब प्रमोशन एक तरह से देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द सेंटिमेंट्स, बट बट actually it had an impact. It could be for any reason. It could be significant significance towards the state Bihar, but it helped in creating that awareness. Oh, it's Madhubani painting sari. It does help. ये सब help करता है। कल को हो सकता है कोई अगर अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंसान इस टाइप की चीजें यूज करता है, तो दैट हेल्प्स इन क्रिएटिंग दैट सेल्स। हो सकता है उस साड़ी की सेल बढ़ जाएगी अब। I mean, if you see from a designer's perspective or a marketer perspective. बहुत बहुत धन्यवाद केशव, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी भाग दौड़ हो गई, समय का हम लोग ध्यान नहीं रख सके, लेकिन कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि आपने कई बिंदुओं को रखा है, और हम लोग ये समझते हैं कि सरकार, समाज और बाजार तीनों जब मिलकर काम करेंगे, तभी हम अपने राज्य के क्राफ्ट्स को, हथकरघा हो, हस्तशिल्प हो, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। हम लोग फिर अगले अंक में आपके पास उपस्थित होंगे। धन्यवाद।